To my blog guys, my name is Arpan Chetri. I hope you all are doing good. दोस्तों आज का सीन ये है कि we are supposed to travel. We are going somewhere out. We are going for a ride. Actually आज का दिन we were supposed to go to Chimney via Dilaram. That's on the way to Kurshung. After Kurshung in fact. लेकिन कुछ कारणों से we are सुनने में आया कि that place, that location, that from Chimney to towards Jod Bangla, that route has been stopped. दैट्स व्हाट दीपानंदा वाज टेलिंग मी। तो अभी जाके देखेंगे कि बाहर में क्या होता है, कौन सा नेक्स्ट रूट कौन सा जाना पड़ेगा। अभी जाएंगे वहाँ पे। अभी ऑन ऑलरेडी 15 मिनट्स लेट। मम्मी ने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, तो फटाफट करके कुछ खा लेता हूँ उसके बाद आई विल कैच यू अप गाइस। Oh, those are my boys. Welcome back to my vlog guys. My name is Arpan Chitra. I hope you are doing good. काफ़ी लेट हो चुका हूँ। Yes. Yes brother. हाँ? क्या चीज़? यहाँ पे लगाना पड़ेगा ये। Hey, जुम। चलो बाय see you guys. जुम है? प्लान में थोड़ा सा चेंज आ चुका है अभी। We are not going to Lamahata, we are not going to Chimney, we are in fact going to Merik. The reason behind is Kanhaiya Bhaiya का जो बाइक है, it's too hefty for this bike to go, for someone to pull it up on that location. Chimney is pretty steep and very high sharp curves, so that's the reason. BN Chandan Bhaiya is not going today. He came to meet us. Chanda, will miss you. We'll miss you there. Last minute में धोखा देना पड़ा था। ठीक है जरा, it's okay, it happens. Next time for sure था। We'll miss you. See you. Zoom है, zoom. Petrol pump. हाँ, petrol pump. Courtyard. This is the restaurant I used to keep coming लॉकडाउन से पहले for tea, लेकिन अभी तो खैर सब कुछ बंद हो चुका है। तो आई होप इट डजंट रेन्स। बादल काफ़ी काले घने पड़े हुए हैं, लेकिन 15 अगस्त नॉर्मली इट्स अ वेरी सनी डे, लेकिन आज का दिन में नॉट रियली श्योर यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, ऐसे रोड के बीच में अड्डा मार रहे हैं। नॉट अ गुड थिंग एट ऑल, नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। जस्ट अ मंथ बैक ये रोड काफ़ी इट वॉज वेरी साइलेंट। यहाँ पे आई यूज्ड टू कम विथ माई दीपेंद्र फॉर साइकिलिंग। आई यूज्ड टू कम हियर फॉर साइकिलिंग, लेकिन अभी देख सकते हो वापस नॉर्मल सा हो चुका है। वापस पीपल हैव कम बैक टू नॉर्मल। लगता है कि लाइफ आस्ते आस्ते करके वापस आ रही है। आई होप दैट एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल एज सून एज पॉसिबल। इस साल एक्चुअली वी आर सपोज्ड टू गो फॉर लॉट ऑफ राइड्स। इन फैक्ट वी आर सपोज्ड टू गो टू काठमांडू through North Sikkim. We were supposed to travel a lot. We had made plans and things were supposed to get executed. But जैसे ही मार्च का एंड आते आते लॉकडाउन शुरू, कोरोना ने फिर ले लिया अपना रूप and then everything got shattered. कोई नहीं यार, प्लान जो है बनता रहेगा, but just that थोड़ा टाइम लगेगा। लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई टोल सिस्टम होगा। ओके, दिस इज़ अ स्क्रीनिंग टर्नर, नाइस। तो हमारे जितने भी बंदे लोग आगे जा चुके हैं। सो इफ़ यू लुक टुवर्ड्स द राइट साइड, दैट्स कर्शंग ऑन द टॉप, लेकिन अभी बादलों से घिरे होने के कारण से दिख नहीं रहा है। 15 अगस्त को नॉर्मली काफ़ी सनी डे रहता है, बट टुडे आज का जो वेदर रिपोर्ट है काफ़ी फॉगी है ऊपर में, ऑन द अपर साइड ऑफ द हिल्स। मज़ा आई दी हल्का है।
दिस लुक्स लाइक अ रेसिंग ट्रैक टू मी। यहाँ का जो ढलान है अचानक से खट करके आ जाता है। दिस इज़ डेफिनेटली नॉट एन ईजी टर्निंग समटाइम्स व्हेन यू आर इन अ हाई स्पीड। दिस इज़ कॉल्ड एज गाड़ी धोरा। यहाँ से हमको लेना है लेफ़्ट, and if you go straight from here you reach towards Pankhabadi road which leads to Kurseong altogether। लेकिन यहाँ का रोड जो है the road that goes towards Pankhabadi is very steep and very risky। चलो 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 चलो। So we have reached Dudhe। तो लास्ट टाइम आई थिंक लास्ट मंथ हम लोग सब यहाँ पे पिकनिक करने के लिए आए थे। मी माई बड़े भाई, ऑल माई छोटे भाई एंड ऑल जितने भी दोस्त लोग हैं, वी हैड गॉन आउट कम आउट हियर। तो पिकनिक स्पॉट एक है यहाँ पे। हाँ दामी दामी दामी। So we can go via here if you go towards this side goes towards a picnic spot। शायद अभी बंद कर दिया, नॉट रियली श्योर यहाँ पे कुछ होगा टूर्नामेंट। Is that मजा? ये दिस इज़ ऑल आर्मी एरिया। यहाँ पे शूटिंग का जो गन फायर आपको साउंड आता है सुबह सुबह या शाम को, दैट्स बिकॉज दे आर प्रैक्टिसिंग सिलगुड़ी। दैट्स रियली नाइस। आई थिंक दिस साइड इट इज़ Kurseong। This side of the thing is Kurseong। And do you know that Mirik से नेपाल भी देखा? You can see Nepal also। And Mirik also shares a border of Nepal। There's a place called Pashupati which is the other side of Nepal। I'm not really sure if we can cover that up or not। We'll see। But I'm sure it's close, so there's no point of going that side also। हल्का मजा आइदिए, cheese to feel ID। This is Mirik, which is 13 kilometers away further from here। Feels so good, man। Feels so really good। If my voice is coming muffled out, please forgive me because of the what do you call this, mask। See the flag looking good, yeah। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम। लवली लवली लवली। कुन चाहिँ हो? उयो बुङकुलुङ हो? हामी जानुपर्ने थियो नि। बाटो त यही होला हैन? उयो पर हो बुङकुलुङ। एक दिन आउनुपर्छ पिकनिक खेल्नु। That's Bungklung। Someday I really want to get to some village area and stay there। I want to build a small house and stay in some village area for vacation, you know। It will be my vacation home। That's in my bucket list too। Bhutan was a major bucket list which was covered up last year। तो ऐसे ऐसे करते करते छोटा छोटा जितना भी रहेगा I'll cover it up in my coming years। छोटा सा ग्राउंड भी है। So Mirik is not really far further from here। रोड झन्डाले है अड्काइदिन रहेछ मलाई। सरी, whatever I'm breathing, boy, I don't feel like going back to Siliguri। This is nature। इतना अच्छा weather लग रहा है। I swear to God, I don't know। Oh my goodness, people are cycling up here also। I like cycling, man।
I was during lockdown. I was most of the time we were cycling, me and my crime master Gogo, and one more friend of mine, Ravi Isun. Mr. Ravi, you have been missed. Ravi साथी तिमीलाई झल्का मिस गर्दैछु. See there. हजुर दा? हजुर? Fuguri. Yeah, it's Fuguri. This is very dangerous. Leaving your helmet on the road. Not a good idea at all. But check the weather out here, man. Check the weather. Boy, boy, boy. This is like this holy moly. My goodness, this is awesome, man. This is awesome. We are now getting close to Tingling. We're very, very close to Tingling now. This is the weather, man. Such a beauty. Such a beautiful weather. Nature at its best. Oh, there you go. मजा आयो, मजा आयो. Nice bike. Bhopal is having fun. So this is Tingling. We finally reached Tingling. Oh my lord! Maza is coming. Oh my lord, we are stopping here. Oh my lord! Door like this. Oh my lord! Oh my lord! Oh my lord! Holy moly! ये भी मजा आई थी नहीं? मुझे लगा कि में चलेगा तो बहुत गर्म हो जाता है जब इसको नहीं भगाएगा ना. ट्रम को कितना सीसी का है भाई भैया? 1700 का ना? Oh, I was wrong. I said 1200. 1700 का सीसी भाई. साइकिलमा हुँदो रहेछ त. उसको तो चला ही नहीं सकता हो तो वो शायद बैटरी में चलता होगा. हो मोटर मेकिंग हो. जो भाई My lord, I can't say anything at all. This is Sorini tea estate. We have reached Sorini. भाई चिपचिपाना शुरू हो चुका है. My clutch and my brakes are getting slippery. Now this is really, really dangerous because you cannot really bump in your speed or you cannot pump your speed up. यहाँ का सीन ये है कि 50 meters की रेंज में भी दिख नहीं रहा है ढंग से. So you'll have to ride it very, 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 very slowly. No, that is what I was talking about. You have to be very cautionative and during turning you'll have to take precautions. You never know कहाँ से भी कहीं से भी गाड़ी आ सकता है. First of all दिखना कम हो जाता है and moreover slip होने का डर रहता है. Good that I've changed my bike का जो टायर रहता है दोनों के टायर चेंज कर चुका हूँ. It was my dad who was like भाई तू चेंज करा ले अपना बाइक का टायर. GoPro के साथ एक ही सीन है कि इसका जो बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाता है. सो हाफ वे भी नहीं पहुंचे, लाइक हाफ वे पहुंच चुके हैं एंड अभी एक बैटरी ऑलरेडी चेंज हो चुका है. कस्तो डर लाग्यो. ओ माय लॉर्ड. यस Har Har Mahadev, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev. So this is Sorini ka, if I'm not wrong,
यहाँ टैक्सी स्टैंड है. If I'm not wrong, just don't quote me on this. People from Meerut, whoever watching this, just correct me if this is if I'm wrong. जैसे कि मैंने पहले ही बताया, the reason behind I am with this rider group is because these guys are awesome. भूटान के ट्रिप में मैंने बताया था कि we are not friends, we are family. We ain't friends, we are family. And likewise हमारा head भी click करता है. And moreover everyone is very when it comes to riding, they are very experienced riders out here in this group. And they take a lot of precautions. And moreover everyone, as I've told you before also, everyone is health conscious, no one drinks also. So that becomes more easy for us to access our head together. वैसे मैंने भी पार्टी छोड़ ली है. I used to party a lot before lockdown. Now I have stopped everything. No more, nothing. And trust me on this, life has become really beautiful. Okay, once I came to Meerut and I was in this building. I don't know if this is the building or not. Yeah, not this building. Okay, that's the building. Yeah. I took a time lapse from this building. I took the permission. I went up in the terrace and took a time lapse. I stayed here for almost 40-45 minutes or maybe an hour, and I took a time lapse from here. मज़ा आया था. So we have reached Meerut. You're in the Meerut, baby. So welcome to Meerut. Oh yeah. Leaking. Oh my lord, कुछ तो डर लगे. वीडियो खींच दो रहे. Oh my lord. This is the situation with my GoPro. Battery got over. So we are planning to go to Simana right now. So let's see what happens. It's raining outside. तो कन्हैया भैया क्या बोल रहे थे आप भूटान ट्रिप के बारे में? Bhutan trip changed my life. Yeah? Really? Not only your life, our life also. In fact, आपके साथ तो जो I feel like traveling in a car like this. If I travel also, I'll let my driver drive, but I don't feel it. But biking is slowly and steadily. I'm trying to get that kind of passion. Passion, right? Yeah, I've got that feeling from inside. No? I want to go in for a thing. That's the reason I'm watching Sons of Anarchy in Netflix also. बंदकोपी हो हैन नि? My lord. Chum bhai. A few moments later. जुम. चलिए अब देखते हैं, अगर हो सके तो पशुपति के लिए निकलते हैं यहाँ से. If possible, Pasupati is closed, that's for sure. But still, we'll see where we can go up till. We'll try to stretch as much as possible. यहाँ से अगर वापस जाते हो तो again it'll be merry go around. आपको वहीं पे वही वाला जंक्शन मिल जाएगा जहाँ से हमने अभी स्टार्ट करा है. So this is because it's a one way. So चलिए. So now we're heading towards Pasupati. Not exactly Pasupati, but Simana, what we call it as. So चलते हैं, देखते हैं सीमाना तक पहुंच पाते हैं तो अच्छी बात है. If it's allowed, then we'll go. अलाउ करते तो जाएंगे, नहीं करते हैं तो फिर कोई बात नहीं यार, कहीं तक तो जाएंगे हम लोग. Long way back, I think 2011 or 2012. यहाँ पे आया था मैं. I had come with a friend of mine. You'll get lot of chai bagan and all those things. But I never knew that this goes to Simana. Nice. When I had come out here, that time I had stayed out here in Meerut for 2 days, in fact 2 nights if I'm not wrong. 3 days, 2 nights. देखिए मैंने कहा था ना आपको कि यहाँ पे काफ़ी चाय बागान मिलेगा. See, this is what I was talking about. This is what I was talking about. My love.
Look at this location. My goodness, this is so beautiful. And this is why I love to ride my bike. Look at this beautiful weather out here. Look how beautiful the weather is. So this is Pasupati, and we have finally reached Pasupati. This is the other side of it is a border to Nepal. Pasupati Nagar, Tamu Hotel. This side is India and that side is Nepal. Nepal पर्छ नि उतापट्टि हैन फटक उता सीमाना अगाडि छ हैन ओ माय लॉर्ड चिसो चिसो हल्का मजा आइदिए So now we are going towards Simana. So we share border with Nepal. Earlier it is believed or it is said to be that this part of the region did belong to Nepal. Then due to some treaty it was given up to India. India was not formed at that point of time, I guess. It was given to British, and then later on when British left India, when India was getting formed, this part came towards the Indian territory. So we were this close to Nepal. Do you know that this part of it in Nepal, this part of it is India? Sab band cha. So this side of it is Nepal and this side of it is India. So welcome to Simana, baby. So that side is Nepal. This is Nepal. बनाएको क्या यो चाहिँ मतलब Huh? यो के बनाएको थियो यो मान्छे गाडीको होला नि कभर हो त्यो कभर रहेछ हो कभर त हो यो पनि कभर यहाँ हैन झुम्न मात्रै छ म So finally we reached. Oh guys. Oh my lord, चिसो लाग्यो. So guys, this is all about Simana. We had a very awesome ride and our boys Deependa, Kannaiya Bhaiya, Kenny, Bhopal, राज और पंचेत्री यो आज के लागिन आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं यहाँ का ब्लॉग अप अंटिल माय नेक्स्ट ब्लॉग माय नेम इज और पंचेत्री विद माय एंटायर भूटान बॉयज सेइंग ओवर एंड आउट एंड जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय So meanwhile we are waiting for our lunch in fact and guys out there pretty busy with their stuff everyone's tired Devendra how was the ride How was the ride? Kanai Bhaiya? Bhopal, how was the ride? It was awesome. Awesome. Now feeling damn hungry, my lord. My lord, feeling lord. It's very hunger is coming, my god. Anta? Oh my lord, oh my lord, oh my lord. Saturday was a Saturday. ये Saturday का wonder only we guys know. भनिदिउँ? बोल दिया जाए क्या? त्यहाँनिर हल्का भएर आएको छु त्यही भएर बाइक चलाउन मजा आउँछ भन्नु पर्यो मजा आयो? मजा नि एकदम After Bhutan, I think this is the first long ride, eh? We had short rides, but long rides चाहिँ होला पहिला. अलि सिन्धुताको ससुराली पनि जानुपर्छ Yes. गयो पछाडि ससुराली जाने अलि मजाले So we've come out here for raincoat. Isn't this beautiful?
This is Korshung from the helipad of Mirik.